you are revolving this curve y square equal to 4x around y-axis. So on revolving this curve around y-axis, it will move around like this. So the area will be, the solid formed by this curve will be like this. Now you have to find the volume formed by this solid. So this is called volume of revolution. Right? Similarly, suppose you have a cardioid in the form of this. Now you have to find the volume of revolution. So if this is a curve, right now it is a curve. But if you move this curve around x-axis, so this will be again a form of solid. Then you find the volume of that solid. This is the volume of revolution. Again, I am writing one question. Suppose you have a curve in the form like this. Suppose. And this curve has an asymptote like this. Now you have to find the volume of revolution around this asymptote. Suppose this is x equal to a. And this is some curve y equal to f. And I am going to write the curve. Now we will find the volume of revolution around x equal to a. So what will be? This curve will be rotated around x equal to a. So this will form a solid in the form of like this. And this is the solid, and you have to find the volume of revolution. So this is the main basic concept how you will find out the volume of revolution. Okay, there are certain formula for solving this volume of revolution. I'm just writing the formula only. It is given in your notes also, you can follow it. The first thing is, here it is only two. The first is volume of revolution around x-axis and volume of revolution around y-axis. Okay, so if the curve is rotated about x-axis, then the volume of revolution will be x equal to a to b pi y square. If the curve is revolving about x-axis. Okay. Now this is the first formula. The second formula is if the curve is revolving around y-axis. If the curve is revolving around y-axis, the volume will be y is equal to a to b pi x square. In case of polar curve, this will be if the curve is r equal to f theta, then the volume of revolution will be 2 by 3 integral. Suppose theta is equal to alpha to beta. So this is 2 by 3 pi r square sin theta pi r square sin theta. When curve is rotating around initial line, that means x-axis. If the curve is rotating around x-axis, then revolving around x-axis, then we will write it 2 by 3 pi r square sin theta. Sorry, r cube sin theta. And when the curve is revolving around y-axis, then the formula will be 2 by 3 alpha to beta pi r cube cos theta. Just note it down only so that we can solve some problems.
Now let's solve some problems. First question. The question is given in the notes. You can follow also. The first question was find the volume of a sphere of radius A. Follow your notes. Find the volume of a sphere of radius A. So see, volume of a sphere of radius A. So first of all, draw a circle. Suppose this is a circle with center 0, 0 and radius A. Okay. Now, how you will get the sphere? To create the sphere, you have to rotate this circle around either x-axis or y-axis. In both the cases, you will get the sphere. So I am rotating this circle around, suppose, y-axis. Right? So the equation of circle is x square plus y square is equal to a square. Right? Now, the volume of sphere. Volume of sphere will be, according to the formula, pi integral y square dx. Now, I am taking 0 to a and then we rotate it around y axis. So suppose you are rotating around x axis, y axis and you are taking 0 to a. So on rotating it, you will get the half same hemisphere. Why? Because we are taking x equal to 0 to a. So to cover the total volume, you will multiply it by 2. So this is 2 pi y square dx. Now this is 2 pi y square, put it 0 a y square and a square minus x square dx. Solve it, you will get the desired answer 4.3 pi. Got it? Now write the second question. One question more. Question is, find the volume formed by revolution of loop of the curve y square a plus x is equal to x square 3a minus x. Y square a plus x equal to x square 3 minus x about x axis. About x axis. Okay, so first of all, you have to draw this curve. First thing, you have even power of y, so curve is symmetric about x-axis. On putting y equal to 0, you will get x equal to 0, 0, 3. That means curve passes through all these in 2 times and x equal to 3a 1 time. Then the tangents. So to find the tangent, you have to equate lowest degree term to 0. That means here you see a y square minus 3a x square is equal to 0, which gives y square equal to 3x square. So you will get y equal to plus minus root 3x. Is that it? So you will get y equal to plus minus root 3x. Root 3x or root 3ax? Y squared. Root 3x. So this is like almost plus minus 1.732x. So this is the tangent. So tangent can be like this. Done. So origin is over, symmetric is over, symmetric is y x-axis, tangent is given. So and point is this one. Now if you take the region, y will be plus minus x square root of 3 minus x by x plus b. Right? So you can see that the region will exist only for x lies from 0 to 3. So the graph of the curve will be, since it touched the origin 2 times,
1 times at x equal to 3a. So, and these are the tangent. So, graph will be like this. This is x equal to 3a. This is 0, 0. So, the volume will be v equal to integral 0 to 3a. Now it is revolving around x-axis, so this is x equal to 0 to 3a pi y square. Now put the value of y square from here and solve. You will get the answer. Clear? Next, I'm just going to solve one polar equation. There are lots of questions available in the notes. Go and solve it. You have the answer. It is given in the exercise form. So try to solve it with yourself. You will get the answer. I am solving one question 6142. Find the volume of the solid generated by revolving the Leibniz gate. R square is equal to. This is called Leibniz gate. R square is equal to a square cos 2 theta. Revolving the Leibniz gate about the line theta equal to pi by 2. Only with I'm going to solve that equation or let's change it. Suppose I want to find the volume of this Leibniz gate around initial line. Initial. So what? So first of all, draw this curve. How you will find out the curve? Theta r. Since the equation have cos theta, then the curve will be symmetric about x-axis. Now, if you put theta equal to 0, so on putting theta equal to 0, cos 0 is 1, so you will get a square, that means r has two values. One is plus a and some is minus a. Okay. Now, if you take theta equal to pi by 2, so you will get again pi by 2. Sorry, pi by 6. Suppose you are taking pi by 6. So this will be 1 by 2, a square by 2, that means plus minus a by 2. Right, and so on. Suppose I am taking some same question, r equal to a1 plus. Suppose. So again, this will be, and the curve, we have to find the volume of revolution around initial line. So use the formula only. So V will be equal to 2 by 3 integral. So this is theta equal to 0, as I have already drawn this graph. So this is theta equal to pi. So V equal to 2 by 3, 0 to theta equal to 0 to pi integral 2 by 3 pi r cube sin theta. Then solve. You will get the answer. मैम आप उसमें जो रीजन कंसीडर किए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें -a से 3a होना चाहिए ना? -a से एक्सक्लूडेड रहेगा -a. हाँ, -a एक्सक्लूडेड रहेगा. तो -a तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने रीजन लिया है 0 to 3. हाँ तो 0 क्यों, मतलब पूरा रीजन कंसीडर करना है ना आपको पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए. अगर आप -a लोगे या फिर -a से इधर लोगे ना, -a से 0 के बीच में लोगे, तो क्या नीचे वाला ऊपर वाला तो एग्जिस्ट कर जाएगा, नीचे वाला एग्जिस्ट करेगा? तो मैम वो तो पूरा वॉल्यूम नहीं निकला ना.
पूरा वॉल्यूम क्या कह रहे हो आप? पूरा वॉल्यूम नहीं निकलेगा। स्टॉप 0 to a लिया था क्या हमने? हाँ यस मैम। टू मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या? मैम उसको रोटेट करेंगे तो वो जो 0 से -a का रीजन होगा उसमें भी तो कुछ वॉल्यूम निकलेगा ना, मतलब वॉल्यूम आएगा ना। उससे तो ये आपको 2 मल्टीप्लाई होगा इससे। इट विल बी मल्टीप्लाई। प्लीज। आप 0 to 3a ले लो, है ना? ठीक है, और इस कर्व को रोटेट कर दो इनिशियल एंगल ऑफ, है ना? तो Yes, अब ma'am. रोटेट कर रहे हो तो वॉल्यूम ये फॉर्म होगा इधर से, यही फॉर्म होगा ना? किसके अराउंड? एक्स एक्सिस था। अच्छा, तो 2 नहीं होगा, तो ये रिवॉल्व हो रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड। Yes, ma'am. एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होगा फिर इधर रोटेट होगा ना? सो दिस तो मैम वो जो लाइन है उससे भी तो एक रीजन बनेगा ना, एक रीजन बनेगा ना उसका भी। ये हाँ उससे उससे भी तो एक रीजन बनेगा ना। हाँ वो भी एक सर्कुलर टाइप का शेप रहेगा। इसे हम एग्जिस्ट ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक तो एग्जांपल वो तो मतलब कर्व। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास सपोज यू हैव दिस कर्व, राइट, एंड दिस इज द एसिम्पटोट। ठीक है, आपको रिवॉल्यूशन करने को कहा जाना है, तो यू विल कंसीडर दिस एरिया। सपोज यू हैव इनफाइनाइट एरिया इन दिस region, you have infinite area in this lower region, so you cannot count those areas. The area will be counted in this function also, but suppose if you have to limit it like this is here and this is here, आप उसे नहीं काउंट कर सकते, और उसे आप तभी काउंट करते हैं जब आपका ये रोटेशन हो रहा है, ये इनफाइनाइट रीजन जा रहा है, ये आगे वहां इसका कुछ लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो बस उसे कैसे लोगे? नहीं लिमिट तो मैम -a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। बाकी बाकी -a एक्सक्लूड कर दे तो 0 से -a के बीच में तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है। So you are saying x equal to -a पे सपोज करेगा, क्या है इक्वेशन इसका? ये y स्क्वायर 8 plus x, नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। दिस इज 0 to 3 ही होगा 5y square dx। गुड मॉर्निंग मैम। एक स्लाइड पीछे कीजिए ना मैम, वो जो फिगर आप बनाए थे मैम, इसके और पीछे। पीछे मैंने फिगर ही नहीं बनाया, आप कहाँ जा रहे हो? लेंथ में या वॉल्यूम में? मैम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन इसके पहले होगा। हाँ यस मैम। मैम ये सेकंड वाला फिगर एक बार बताइए ना। Suppose the curve is like this, and you have an asymptote of x equal to a, and you are rotating this around this. So this is रोटेट करना है, but यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है, वो आपको एक्चुअली पढ़ना भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे फिर स्किप कर दिया। इसका फॉर्मूला अलग होता है, दिस इज v equal to pi integration of this curve, this is O, this is N, so this is O N square, and then you make a perpendicular from this point to this, so this is suppose M and this is P, so this is D of M। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये अलग ही चीज है। अगर किसी प्रॉपर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। ये बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि एसिम्पटोट उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। और मैम कब रोटेट होगा और कब रिवॉल्व होगा ये सब मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन में ही। रोटेशन इज ऑलमोस्ट सेम।
मैम फॉर्मूला उसका लगभग अलग है। फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है मतलब इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो फॉर्मूला होगा y स्क्वायर dx। अगर इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो फॉर्मूला होगा x स्क्वायर dy प्लस a। और मैम थर्ड फोर कब यूज होगा तब? ये तब यूज होगा जब आपके पास पोलर फॉर्म है। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू हैव कार्टेशियन कर्व। this will be applicable when you have a polar curve. ओके मैम। Okay now sir is here। मैं यहाँ रोक रही हूँ क्लास।